Okay, I wait for 5 minutes for joining others.
Okay. My voice is clear to everyone? Hello. Sir. Yes, sir. Okay. Today I the measurement of capacity using sharing bridge. The capacitance by using sharing. Okay. Okay. And laboratories in laboratory what happened and how we can be. So now we see the measurement technique of unknown capacitance. So firstly, this part is the objective of this that to determine the capacitance of unknown capacitor. Determine the objective is that to determine the capacitance of unknown. Just 1 second. This is circuit diagram of which or a millivolt ampere, and this is the R1, R3, C4, and R4. Here is the unknown C4 capacitor we measure capacitor whose capacitance is to be measured. Here is the C1 number unknown which capacitance we can who sharing breeze. Mute yourself. Shreya, सिविल इंजीनियर बन गेले लगता नहीं कि देखाई पास का तो काम है तो फायदा बा अरे तू ओकरा में कितना नंबर है टाटा कंपनी का देला सब दोस्त से यहां में एक बार सुनिए क्या थोड़ी है क्या उतना मत दो फेंक देता क्या तो मेरा हाथ पूरा छोड़ पकौड़ी छापने से लो क्या करेंगे सब्जी अच्छा नहीं देखो ना किसका हेलो हो जाएगा क्या ना शांति क्या बोलना था बुआ को देखो मैं बुआ रही थी क्या चाय के लिए क्या बोलनी हेलो
पहले सपना वाला अरे वो लड़की का शादी नहीं हो रहा है, बोला वहाँ काट दिया है, दिया है तो वहाँ काट दिया, काटे पकड़ दिया है, बड़े को पकड़ दिया, ये किसको दिया? बोल लो। उनको दिया है बड़े को, कौन लो? again. आज भी है मिठू लड़की का, और बड़े का बुझाएगा मजा। Claro. Oye, गया रोक किया तो आप लोग कैसे करती है मिठू, पट पट चोट लगा, पट पट फुट भी गया। This is diagram of pairing bridge for measurement of. Okay, so here C1 common capacitance whose capacitance is loss of in a or in the capacitor C1, and the C standard capacitor, and R3 is the resistance, R4 is the variable capacitor, R4 is the resistance, R3 and R3 R4 is the variable, and R3 is the non-inductive resistance. yeah. Latest. First is arm at a potential difference between this point will be same, so there will be no current is flow through this millivolt meter. So the bridge is balanced. So under bridge balance condition, R3 R4 to right. C on by J omega C2 R4 plus 1 equals to R3 and R2 J omega C2 1 by J omega. Now the next equation is that equating R4 minus of equals to minus of 3 omega R4 C4 C2. But equating the real and imaginary part, you can get the two equation. The equation is R1 equals to, now C1 is equals to R4 C2 R3. R4 C2 R4 into C2 by obtained C4 and R4 chosen as the variable element. Now the dissipation equals to on dissipation factor is bridge. This is the basic part of अरे सुनो ना, मोबाइल अभी भागो यहाँ से। पैड में चार्ज है और कूदो।
क्या कर ले दीदी पास बाहर में चार से कूदो नून नून already दीदी पास theory आज is an advantage and disadvantage and suitable for measurement of unknown capacitance पासवर्ड लगाइए ना by standard capacitance and a non-inductive variable resistance. Not very- we get the unknown is which R4 into R2 R which measure apply the voltage from the signal generator of frequency which is V your supply voltage is a 3 volt and it also set the unknown capacitance value from set of the capacitor value tab. Then switch on supply to the read the millivolt meter. Now switch on the supply millivolt meter deflection and now choose the value of C2, C4, R3 and R4 from the capacitance and resistance box and vary the value from a particular value to a null position. We all see in lab that the what is the capacitance box or what is the ratio जीरो जीरो capacitance and resistance. बोले तो पेड़ में तो कूद जाओ Achieve. Then click to measure the capacitor value tab and click sim and observation is calculated value is unknown capacitance sim. So we observe the dissipation factor of an unknown capacitor यहाँ करके क्या फायदा omega वहाँ C करो R where omega is बाल नोचो मोबाइल सुन लिया मोबाइल में एक बार मर भी जाएगा आइडिया बताते हो तुम जल्दी जितना करती हो पंखे खराब हो गए capacitance simulating the capacitance apply the voltage 3 volt from signal generator. Here signal is 51 to apply supply voltage 3 volt from the signal generator or arbitrary frequency. Get a unknown value from capacitance set value. From that is the set the unknown capacitance by that हमारे इधर तुमको मार के उठा on the supply with the millivolt meter deflection. तो जाके सुनो The value of R3 resistance. Then observe and produce null. Null is achieved means this point is नहीं चलाएगा वो बना रहा or है near to zero. In simulate we click on the simulate button where it okay click on the in R1 and also observe the discharge of unknown capacitance as a omega C dot R हेलो सर part and now it is the yeah सर सर आपका ना hello आवाज नहीं आ रहा है सर आपका आवाज नहीं आ रहा है और स्क्रीन भी विजिबल नहीं है आवाज तो ठीक है
can again leave the class and again join. Now my voice is clear to everyone. Hello. Yes sir. Yes sir. Sir, but screen नहीं visible है. Now screen is visible. Yes sir. Yes अभी ठीक है. Now measurement of capacitance carrying this screen is visible to you. स्क्रीन शो कर रहा है ना सबको अभी? सर फिर से नहीं शो कर रहा है सर आपका आवाज. Yes, सर sir. आई थिंक आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. Hello आज everyone. नेटवर्क मुझे थोड़ा प्रॉब्लम, इन जनरल ऐसा नहीं होता है मेरा, थोड़ा अप एंड डाउन कर रहा है. अभी तो अच्छा सही दिख रहा है नेटवर्क. अभी आवाज है ना ठीक क्लियर? हाँ सर अभी ठीक है. Just 1 second, I change the Wi-Fi connection. Just let's see. Hello. Now voice is clear, Dichika? Hello. Yes sir, voice is clear but screen not visible. Just now share the screen. Now screen is visible. Yes sir. Okay. I repeat the same thing again. Okay. The measurement of capacitance by using sharing bridge. So theory first is that objective is to measure the capacitance of unknown capacitor. So this is the circuit diagram of sharing bridge. Where the unknown capacitance is C1 and R1 is the resistance. R1 is the associated resistance with a C1 and R3 is the non-inductive resistance and C2 is the another standard capacitor and C4 is the variable capacitor and R4 is a variable non-inductive resistance. So the bridge is balanced when the potential difference between this point and this point is same, means there will be no current flow in through the or no voltage flow through the millivoltmeter. Okay, so if this condition is satisfied, then the equation is that we all know the equation of this arm. So under balance condition, we know that Z1 Z4 equals to Z2 Z3. यही तो था ना मेरा बेसिक इक्वेशन फॉर ब्रिज बैलेंस. Okay. Yes So sir. here Z1 is equals to, here Z1 is the value of C1 plus R1 and Z4 value is C4 and R4 and Z2 is the C2 and Z3 is the R3. Now in repeat, C1 is the capacitor whose capacitance is to be measured and R1 is the series resistance representing the loss in the capacitance, a capacitor C1 and C2 is the standard capacitor and R3 is the non-inductive resistance and C4 is the variable capacitor and R4 is the variable non-inductive resistance. So now first is that in R on is the R1 plus 1 by j omega C1, which is Z1,
Z1 is the R1 plus R1 plus 1 by j omega C1, and here R3 Z3 is equals to R4 by j omega C4 R4 plus 1, and here Z3 is the R3 and Z2 is the 1 by j omega C2, 1 by c omega 2. Now equating these two, this is the multiplying this part is the R1 R4, this is the R1 R4 minus of j by R4 by omega C1, R4 by omega C1 and R4 by omega C1. Now equals to is the in that size that the minus of j omega R3 by omega C2 by omega C2 plus R3 R4 C4 by C2. So first is the equation number 1, then equation number 2. From equation number 1 and 2, we equating real and imaginary part, that we get the value of R1. R1 equals to what? R1 equals to, this is the our real part. So from real part, equating real part, we can get the R1 value is R3 R4 by C2, and equating imaginary part, we get the value of C1 is C1 equals to R4 C2 by R3. Now, so this is the equation, and another is that dissipation factor in of a capacitor. Actually, it is the power loss. It is the power loss, and when a AC voltage applied through the capacitor, and the power is either absorbed by the dielectric material or internal resistance. So now the dissipation factor D1 is denoted by D1, which is equals to omega C1 R1. So we all know about the value of unknown value of R1 and C1. Now we get value of D1. So this is the basic formula for finding the unknown capacitance and unknown resistance by using capacitor sharing bridge. And also we get the value of dissipation factor. So dissipation factor, actually it is the power loss due to the applied current through the capacitor. Okay. Now the procedure is the second part is the procedure. So we get the second part. Procedure is first that we apply the voltage from signal generator or arbitrary frequency, which is V equals to 3 volt, and also set the unknown capacitance value from set variable tab. Just go to the simulator part. So here, just 1 second. Apply the voltage 3 volt from signal generator or arbitrary frequency generator and set the unknown capacitance value by this box. So this is the, from this box we can set the value of unknown capacitor. Okay. Then switch on the supply to get the millivoltmeter deflection. After setting the unknown value of capacitor C1, we can switch on the circuit. After switch on, we get the deflection of this meter, this millivolt meter, and now we choosing the value of C2, C4, R3 and R4 from the capacitance and resistance box, and vary the value of some particular values to getting the null value or zero value of this millivolt meter or nearest to zero value. So observe
that the millivoltmeter pointer to achieve the null or closest to zero current, zero voltage or zero current drop. And if the null position is achieved, then we switch to measure the capacitor value on the tab and click on simulate. So we observe the calculate the unknown capacitance value C1 and also its internal resistance R1. And also we observe the distribution factor because we know the value of C1 and R1. So distribution factor D equals to omega C1 R1. So we also get the value of distribution factor. Now the note here is note on things that the value of C2 and C4 is 100 picofarad to 11.11 microfarad, and each step of 100 picofarad, and the range of R3 and R4, and the range of R3 and R4 is that on ohms to in to 1111 ohms. So it can set any of the value, and this is the range of R1 and R3, sorry, R3 and R4, and this is the upper is range, and we can shade the value from this box also, and we shade the or change the value of this circuit also. So first initially what happened? We shade the capacitor value. So applying 3 volt or signal generator, we with the value of 3 volt. So it's setting the 3 volt. Now set the unknown capacitance value. So suppose the value of, suppose this is so here we set the value of this 13.22 microfarad. Now see that switch on the supply to get the millivolt deflection. Now switch on the button. So you see when we switch on, the voltage is that 94 point something. So we changes the value of C2, R3 and C4 and R4. So you see it changes the value. Setting the value from here to getting the null position of this pointer.
Actually, setting the value from here, we getting the null value. So we adjust the value, get the null value. You see here, this is decreases. Hmm. Just update the value. Job. Just wait. अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रोसीड्यूर जो है इसी तरह हमको एडजस्ट करते करते यहाँ पर जीरो लेके आना है शायद. आ रहा है. फोर्टी मिली वोल्ट एम्पियर शो कर रहा है, लेकिन और भी कम आना चाहिए. सेकेंड.
जस्ट हम ये कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज लेके आना कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो 90 में जब दिए 22 हो गया तो है थोड़ा। रेजिस्टेंस से उतना ज़्यादा नहीं वैरी कर, सिर्फ कैपेसिटेंस से वैरी कर रहा है ज़्यादा। प्लस 20 ऑन तक मिली वोल्ट तक आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट बिलो 5 और बिलो 15 आना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं, एक सेकेंड। ठीक है, आज एक्चुअली नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये जीरो आएगा। ये वैल्यू जो नेराबुट टू जीरो एक्चुअल परफेक्ट जीरो नहीं आएगा, समथिंग ये होगा बिलो 20 से भी नीचे आएगा। सर हाँ बोलो, सर मेरा 0 आ गया। क्या वैल्यू क्या क्या लिए? तनिया बोल रहे हो सर ना? C1, यस सर।
एक्चुअली सर मेरे पास C1 में माउस थोड़ा खराब हो गया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। वैल्यू क्या? सर C1 में 97.9809 है। इसमें 97 लिए हो? ठीक है, एक सेकेंड। नाइन्टी सेवन पॉइंट समथिंग किए है। यस सर। और C2 C4 ये सब का? C4 को सर एकदम लो करके रखे हैं, C2 को एकदम हाई कर दिए हैं। C2 को हाई कर दिए? C2 को, हाँ यस सर। और आगे नहीं हो रहा है मेरा। वैल्यू तो यह शो कर रहा है, शो करेगा। तुम्हारा कितना शो कर रहा है? मेरा सर सर सेम यही वैल्यू शो कर रहा है। तो बोल रहा है 0 आ गया। सर R3 और R4 को भी वेरी करना है ना? हाँ, R3 R4 का कितना दिए? सर R3 का थोड़ा सा ज्यादा होगा R4 के कंपेयर में। जितना हाँ, R4 लिया है ना, आ उससे गया। थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, आ गया। देखो मेरा आ गया। यस सर। देख रहे हो? और भी आएगा, चेंजेस करेंगे तो ये लगभग मतलब 0 के आसपास है, क्योंकि बिलो 5 हमने क्या बोला, नीचे आएगा। तो बिलो 5 भी है ये, कि और भी स्वीट एडजस्टमेंट करेंगे तो और भी क्लियर आ जाएगा। हाँ, देखो एकदम नजदीक आ रहा है, 0 आ रहा है, आ जाएगा अभी। तो इसको 0 ही मान सकते। ठीक है, अभी ऐसे करके ये 0 नाल से लगभग नाल हो गया। अभी हम लोग जो नेक्स्ट ये है मेजर द कैपेसिटर वैल्यू, इसमें क्लिक करेंगे। तो इसमें क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, वोल्टमीटर रीडिंग, मतलब इसमें ए वैल्यू शो कर रहा है या। सो नाउ अगर तो हमारा कैपेसिटर वैल्यू एंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड डिसिपेशन फैक्टर एट ए टाइम आ जाएगा। तो नाउ क्लिक ऑन सिमुलेटेड। सो रेजिस्टेंस वैल्यू 89.44 शो कर रहा है और कैपेसिटेंस वैल्यू इन 11.2224 एंड डिसिपेशन फैक्टर 3.1577 आ रहा है। तो ऐसे करके एक्चुअली हम लोग को कैलकुलेट करना है। और हम सबको बोल रहे हैं ये भी लैब IIT खड़गपुर बोल के गूगल में सर्च करोगे तो आ जाएगा, कोई भी इसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी और 2 वीक इस तरह चलेगा, उसके बाद कॉलेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि इस वीक, नेक्स्ट वीक और उसके बाद अगला वीक के बाद ही कॉलेज, 25 के बाद ही मेरे को लगता है ओपन हो जाएगा कॉलेज फिर से। अब अगर मेजर करेंगे तो कितना आ रहा है देखते हैं, 42। तो लेके आना है। थोड़ा सा एक करने से देखो ना, एकदम पूरा चेंज हो रहा है वैल्यू।
देखो 0.0065 आया है। जो भी इसी तरह हम लोगों को मेजर करना है। ऐसे प्रैक्टिकल भी करेंगे तो उसी तरह हमको जो रेजिस्टेंस डिकेट बॉक्स देखे हो ना, उसी तरह वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा, उसी बॉक्स से रेजिस्टेंस को भी एडजस्ट करना होगा और उसी बॉक्स से कैपेसिटर का भी वैल्यू एडजस्ट करना होगा। अभी एडजस्ट करके हमको नाल लेके आना है, जो वैल्यू आएगा उसी के अगेंस्ट कैलकुलेट करके हमको एक्चुअली प्रैक्टिकली निकालना है वैल्यू। ठीक है, आज एंड करते हैं क्लास। ओके यस सर।